going to explain you Geography Chapter 3, Our Changing Earth. So student, you must have read in newspaper or seen on the television about natural disaster. These are sudden changes that occurs on the earth's surface. These are due to sudden movements that originated within the earth. That is evolution of landform. Earth movement. The evolution of landform has been taking place due to two type of forces, that is endogenic forces and exogenic forces. It is divided, earth movement divide किया गया है दो forces में. Endogenic means, endo means inside, तो whatever the forces taken inside the earth, जो धरती के इंटीरियर पार्ट में फोर्स एक्टिवेट होते हैं उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं. एंड एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड, तो वॉट एवर द फोर्स हैपन आउटसाइड द अर्थ दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो इट इज classified into different categories. Sudden movement like earthquake, volcano, landslide, dystrophic forces, building mountains, and exogenic forces, erosional and depositions, river, wind, sea waves and glaciers, etc. So students, interior part of our earth, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो भी चेंजेस होते हैं धरती के इंटीरियर पार्ट में, सेंटर पार्ट कोर. सो यू नो दैट देयर इज लॉट्स ऑफ हीट produced over inside the earth. So the heat and pressure from earth molten magma causes the convectional currents. These generate forces that cause movement of the plates, and this theory is known as plates tectonic. कोर पार्ट में मॉल्टेन मैग्मा बॉयल हो रहा है इनसाइड अवर अर्थ, और जैसे जैसे वो हाई स्पीड में मूव होता है जहाँ पर कोर पार्ट है, देन कुछ पार्ट में वो कूल डाउन हो जाता है, मैग्मा कम्स डाउन कूल, एंड अदर पार्ट हॉट मैग्मा राइजेज अप, और वो राइज होकर बाहर धरती के अर्थ सरफेस पर फ्लो आउट होने लगता है. इसकी वजह से डिफरेंट डिजास्टर कॉजेज होते हैं आउटसाइड अवर अर्थ सरफेस, दैट इज वॉल्केनोस. Volcano is a vent or opening in the earth's crust through which molten material or magma from the interior erupt. और molten magma जब धरती के आउटसाइड सरफेस पर आता है तो उसे लावा कहा जाता है. Then the interior of the earth is in molten state. Extremely heat and pressure forces of molten magma, pieces of solid rock, ash, gases and steam through these vents. The magma erupt as lava accumulated around the vent in layer. Types of volcano. First is active or living volcano, which have erupted frequently in the recent past and are expected to erupt further any time in future. That is active or living volcano. Second type of volcano is dormant or sleeping, which have not erupted for centuries but may still do so. Next is dead volcano. Dead volcanoes have neither erupted for thousands of years nor is there any possibility for further eruption in the future. That is dead volcanoes, जिसमें कोई भी frequently function possible नहीं है thousands of years तक. That is called dead volcanoes. Next natural disaster, earthquake, movement of lithospheric plate. Volcanic eruption and faulting leads to vibration, which are felt on earthquake on the surface of the earth. Earthquake are sudden vibration or violent tremor. Earthquake, भूकंप, धरती के इंटीरियर पार्ट में बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फोर्स, फॉल्ट, एपिसेंटर धरती के अर्थ सरफेस पर सडन वाइब्रेशन होने की वजह से धरती सडन शेक करने लगती है. दे स्ट्राइक सडनली एंड इफ दे आर ऑफ हाई इंटेंसिटी बिल्डिंग कैन बी
टॉपलेट एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस्ट। स्क्रीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन का पिक्चर है कॉज्ड बाय भुज अर्थक्वेक गुजरात में। The Republic Day 26 January in 2001 turned out to be a dead date with the thousands of people in Gujarat. A major earthquake measuring between 6.5 and 7.9 on the Richter scale. Destruction in Bhuj. It is a massive earthquake, killed between 14,000 and 20,000 people. Damaged over 1.2 million houses and affected almost 8,000 villages in Gujarat, West India. More than 3,000 health facilities were destroyed.